Good morning, students. Welcome in my today's class. Today we are going to learn the concept of modal verbs. Okay, modal verbs are helping verbs, and these are, for example, can, cannot, could not, must, may not, must not, should not. So these are the few examples of modal verbs. These are basically known as modal verbs. So we are going to learn about these verbs in this video. So let's get started. Now the few main modal verbs which we are going to learn in this chapter are can, may, should and must, and along with their negative like can ka cannot, may ka may not, should not and must ka must not. That if we add a not after a word, then it becomes the negative of that word. Okay, so can becomes cannot, may becomes may not, must become must not, and should becomes should not. Okay, so basically इनके जो यूसेज हैं वो ये हैं कि दीज आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग सम पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन इन अ सेंटेंस. ये हमें मदद करते हैं कोई पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की एबिलिटी, कोई परमिशन या कोई ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटी बताने में, एक्सप्रेस करने में सेंटेंस में हमारी मदद करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में. For example, first is can. So can expresses the ability to do something. ये हमारे किसी काम करने की क्षमता को बताता है. If we are able to do something, then we can use that we can do this. And cannot similarly उसका negative यानी कि उसका opposite है. If we do not have that ability to do something, then we can simply say that we cannot do this work. So cannot expresses what? It expresses the lack of ability, मतलब क्षमता में कमी to do something. It can also be written as can apostrophe comma and then t, which is pronounced as can't. Okay, for example, I can't dance but I can't sing means that I'm able to dance but I'm not able to sing. मेरी एबिलिटी केवल डांस करने की है बट मेरी एबिलिटी गाना गाने की नहीं है. सो वन इज़ कैन एंड अदर इज़ कांट. आई कैन रन फॉर अ किलोमीटर बट आई स्टॉप but I can't skip means that I can run for a kilometer before I stop. मतलब मैं बिना रुके 1 किलोमीटर तक चल सकती हूँ. आई एम एबल टू run for a kilometer without stopping, but I can't skip. But I cannot skip 1 kilometer before stopping. मतलब मेरी क्षमता जो है वो भागने की है, केवल skip करने की नहीं है. कैन इज़ यूज फॉर आस्किंग परमिशंस. अच्छा, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन को यूज़ करना चाहते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, तो हम परमिशन लेने के लिए, इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं. वेर एज कैन नॉट शोज़ द रिफ्यूज़ल टू गिव दैट परमिशन, जबकि कैन नॉट हमें रिफ्यूज़ल कर दे एक्सप्रेस करता है उस परमिशन को देने से, मतलब मना कर देता है. कैन का अपोजिट होता है कैन नॉट. तो अगर हम कोई कैन लगा के कोई क्वेश्चन में परमिशन मांगते हैं तो कैन नॉट सीधा उस परमिशन को मना कर देता है, यानी कि रिफ्यूज़ कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई प्लीज़ टेक दिस कॉल. क्या मैं ये कॉल ले सकती हूँ? दैट्स अ क्वेश्चन. आई एम जस्ट सीकिंग योर परमिशन दैट कैन आई टेक दिस कॉल. येस यू कैन. अगर मैंने बोला येस तो मैं कैन लगाऊंगी, मीन्स देर इज़ नो नेगेटिवनेस, दैट येस यू कैन, आई हैव गिवन द परमिशन टू टेक यू द कॉल. और सिंपली हम नहीं भी मना भी कर सकते हैं परमिशन देने से कि नो यू कैन नॉट, नो यू कांट. ठीक है. सिमिलरली, येस you can use my pencils. Okay, you can use my pencils, that I am giving you the permission that you can take and use my pencils. Similarly, हम इसको refuse भी कर सकते हैं, that no, you cannot use my pencils. So it is our wish कि हम permission grant करते हैं या नहीं. Now the next modal verb is may. May is used to seek and grant permission.
बट इट इज़ द फॉर्मल वे. ओके, देखिए हम पहले जो कैन वर्ड यूज़ कर रहे थे वर्ब, उससे भी हम परमिशन सीख कर रहे थे, बट दैट वॉज इनफॉर्मल वे ऑफ सीकिंग परमिशन, एंड दिस इज़ मच पोलाइटर वे and much formal way of seeking permission from anyone. Okay, so may is used to seek and grant permission. Again same use hai, but formal way में. Okay, may not is used to refuse permission, और similarly may not का मतलब होता है उस परमिशन को लेने से मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना. मे नॉट इज ऑल्सो रिटन एज मेंट. ओके, MAYN and then apostrophe comma and then T. O is silent. So you can see in every short form or the contraction form of these, there one apostrophe comma is basically used and the O is usually silent. Okay, so I will make another video for teaching you the short forms. Till then you just know this कि हम एक apostrophe comma का इस्तेमाल करते हैं और O जो होता है वो silent होता है. Remember that although both can and may can be used to seek and grant permission, may is considered to be more polite while can is considered to be much more casual. Yes, जो मैंने अभी बताया आपको कि दोनों ही can और may दोनों ही grant और seeking permission के लिए use होते हैं, मगर may जो होता है वो consider किया जाता है ज़्यादा formal और polite way to grant someone's permission, और can जो होता है थोड़ा सा casual way हो जाता है. May I use phone for a call? May I come in, sir? So this is a very formal way to ask you that may I use your phone for a call or may I come in? So this is a very informal way which we generally use not with our friends or relatives but in some formal places like our school, some institute or some organization. Next is should. Should and should not are used to give suggestions. These are very polite expressions. Yes, जब हम किसी को कोई suggestion या advice देते हैं तब हम ये should या should not लगाते हैं. For giving you some do's and don'ts like this and do not do this, ये आपको करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए. So for that we use should and should not. You should get a haircut soon. Yes, मतलब तुम्हें करवा लेना चाहिए एक हेयर कट. चाहिए, you should go for a walk after having slept all day. तुम्हें वॉक पर जाना चाहिए. So when we advise someone for something, for doing something, we generally use should. Must expresses the absolute need to do something, while must not expresses the absolute need to not do something. Okay, अच्छा, must हमें बताता है, देखिए should और must में भी बहुत रेयर डिफरेंस है. should हमें ये बताता है केवल कि आपको ये काम करना चाहिए और आपको ये काम नहीं करना चाहिए, मगर must हमें ये बताता है कि आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए. there is an absolute need to do that work. एंड मस्ट नॉट जस्ट उसका अपोजिट है कि आपको ये करने की बिल्कुल भी कतई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की. ओके, एब्सोल्यूट नीड, इसको करने की कोई भी आवश्यकता आपकी नहीं है. ठीक है, सो मस्ट हमको कोई एक एब्सोल्यूट नीड के बारे में बताता है और मस्ट नॉट उस एब्सोल्यूट नीड को बिल्कुल मना कर देता है. आई मस्ट फिनिश द वर्क. You must be more attentive in class. You must not leave your homework incomplete. Okay, finish the work मतलब मुझे ज़रूर अपना काम फिनिश कर लेना चाहिए. ठीक है, and you must be more attentive. तुम्हें और ज़्यादा आवश्यकता है attentive रहने की क्लास में, और तुम्हें बिल्कुल भी अपना homework incomplete नहीं छोड़ना है. So you must not leave that incomplete. So students, here you have come towards the end of the video, and here the chapter ended, which I taught the very easy concept of some modal verbs, easy modal verbs like can, cannot, may not, must not, and should not. Okay, and there are many more modal verbs, but in this standard you're only sufficient with these modal verbs only. So I will be back with a new next chapter. Till then you just wait for my video, go through the lesson and do the book exercise for the same. Take care of all, and thank you so much for learning.